ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी टू रिएक्शन क्या होता है इसमें, अपना साइटोटॉक्सिक रिएक्शन इज बाय ह्यूमरल एंटीबॉडी दैट अटैक सेल सरफेस। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन क्या है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन ह्यूमरल एंटीबॉडी दैट अटैक सेल सरफेस, ह्यूमरल एंटीबॉडीज दैट अटैक सेल सरफेस, ह्यूमरल साइटोटॉक्सिक रिएक्शन दैट ह्यूमरल बॉडी साइटोटॉक्सिक रिएक्शन of by humoral body antibodies humoral antibodies, ठीक है, that attack the cell surface antigen or specific cells or tissue, specific cell or tissue that attack specific cell or tissue। क्या है, cytotoxic reaction the humoral antibody that attacks antibodies of the cell surface, antibodies that attack antibodies and humoral antibody that attack cell surface और specific cells। ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, ऑप्सोनाइजेशन करता है C3 IgG ऑप्सोनाइजेशन बाय प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और C3 भी C4 है ऑप्सोनेंट। ठीक है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी क्या होता है, इन दिस कंडीशन द होस्ट एंटीबॉडीज produces certain autoantibodies which bind and disturb normal functioning of human self antigen which bind host produces क्या करता है, होस्ट प्रोड्यूस करता है some abnormal antibodies। ठीक है। होस्ट प्रोड्यूस करता है certain autoantibodies, होस्ट produces certain autoantibodies which bind and disturbs normal functioning of the human self antigen, example myasthenia gravis, complement activation and inflammation, which is byproduct of complement pathways such as C5R chemotherapy can reduce complement activation and inflammation। ठीक है, ये तो कर देगा byproduct। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट डेटा टूल आर। ठीक है। मैकेनिज्म इसका क्या है, मैकेनिज्म पहले आइडेंटिफाई करेगा एंटीजन ऑन द सरफेस अट्रैक्ट FAB पोर्शन। ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंटीजन ऑन सरफेस अट्रैक्ट FAB पोर्शन जो है, फिर वो बनाएंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल। ठीक है। एक्सपोजेस MSC अनअटैच FC फ्रेगमेंट लिंक बिटवीन एंटीजन एंड कॉम्प्लीमेंट, और FC जो है वो कॉम्प्लीमेंट से लिंक करेगा, कॉम्प्लीमेंट से बिटवीन एंटीजन एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। क्लासिकल पाथवे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोडक्ट C3 ऑप्सोनाइजर अट्रैक्टेंट एग्जाम्पल्स क्या है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया मायस्थेनिया ग्रेविस, माय ब्लड ग्रुप इज RH नेगेटिव, टाइप 1 डायबिटीज RH नेगेटिव, टाइप 1 RH इनकम्पैटिबल, इडियोपैथिक गुड पास्चर सिंड्रोम, ग्रेव डिजीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मायस्थेनिया ग्रेविस। एंटीजन आया, एंटीजन एंटीबॉडी लिंक्स टू FC ऑफ द एंटीजन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, टारगेट सेल डिस्ट्रक्शन। Type T hypersensitivity reaction results from the excess formation of immune complex antigen antibody complex। ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉट टिश्यू स्पेसिफिक occurs when antibody complex will to get removed in the body। it is not tissue specific, मतलब reaction result from excess immune complex। ठीक है। reaction result from excess formation of immune complex। ठीक है। अभी आर्थरस रिएक्शन इन लंग्स में आना था, फार्मर्स लंग, इन स्किन में आना था, एलर्जी ड्यू टू डिसेंसिटिव, अभी गुड पास्चर सिंड्रोम इसमें भी है।
GBM essentially rheumatoid arthritis, there is nuclear antigen. Rheumatoid arthritis, there is nuclear antigen. Farmer's lung is active mice contains hay act. Farmer's lung is active contains hay active antigen. Okay, immune complex formation हो गया. Failure to remove uncommon antibodies in the tissue. FC component of antibody linked with it. Immunity is the state of resistance offered by the host. Immunity is the stage of resistance exhibited by return. Immunity is the state of resistance exhibited by a host. Immunity is the state of resistance exhibited by a host towards injury towards injury. ठीक है. इम्यूनिटी दो तरह की रहती है. इनेट इम्यूनिटी रहती है और एक्वायर्ड रहती है.
Acquired second line from the first line represent present for initial immediate protection. It lacks specificity and memory. It lacks specificity and memory. Antigen specific capable of the reading. Physical barriers like अपनी stomach acidity, chemical barriers. Vagina में acidic vaginal secretion सब minor zinc ठीक है mucus tract होती है mouth oral cavity lysozyme ठीक है नेचुरल क्या है नेचुरल स्पीशीज अपना immunity में individual confined to a particular race may be absent in the community confined to a particular race may be absent in the community confined to a particular race ठीक है अभी antimicrobial Soluble antigen combines with antibody in the presence of electrolyte. Soluble antigen combines with antibody in the presence of electrolyte at optimum temperature pH forming in soluble antigen combined with soluble antigen combined with antibody in presence of electrolyte at optimum temperature pH forming insoluble precipitate. Agglutination part देख इसका एग्जाम्पल है कांस टेस्ट फ्लोक्यूलेशन टेस्ट और syphilis tube flocculation precipitation in a liquid in the form of flocule is known as flocculate slide flocculation test VDRL ठीक है Ascoli's thermoprecipitating test anthrax ठीक है ये हो गया अभी agglutination reaction particulate antigen particulate antigen combines with particulate antibody there is resulting in formation of clump is known as agglutinin IgM more effective अभी agglutinin में slide agglutination test blood grouping के लिए tube agglutination test into Vidal Coombs test ठीक है Wheels Felix for rickettsia Coombs test क्या डिटेक्ट एंटीबॉडीज वो डायरेक्ट डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी इज डन फॉर ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न ठीक है अभी Coombs टेस्ट जो है ये 3 टेस्ट हो रहे already quoting the direct antibodies already quoting the RBC detect antibodies already quoting the RBC detect antibodies quoting the RBC quoting patient RBC detect antibodies
एंटीबॉडीज कोटिंग पेशेंट आरबीसी, ठीक है, कोटिंग पेशेंट आरबीसी। अभी इनडायरेक्ट क्या है, एंटीबॉडीज इन द पेशेंट सीरम अभी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट अग्लूटिनेशन टेस्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, a fluorescent label specific antibody. A fluorescent label specific antibody binds directly to the unknown antigen. Binds directly to the unknown antigen. Fluorescence directly to unknown antigen. Fluorescent label antibodies bind directly to unknown antigen and tissue. Is known as immunofluorescence. ठीक है, by which there is no requirement of probe in these techniques. ठीक है, opsonization process by which particle are coated by specific host protein. ठीक है, called opsonization. By which particles are coated with special protein for recognizing phagocytosis and leukocytosis. Recognizing and phagocytosis by leukocyte. To help in recognizing phagocytosis by leukocyte. ठीक है, specific antibodies block or neutralize harmful effects of antigen like bacteria. Group of plasma protein that can be active group of plasma protein that can activate antigen antibody complex. A particular coat is coated by specific host protein called opsonin. Specific host protein called opsonin. Specific host protein called opsonin. Leukemia, neoplasm of hematopoietic. The chronic myeloid leukemia के 3 फेज है, chronic phase, accelerated phase, blast phase. तो accelerated phase में क्या होता है, 10 to 19% blast in blood and bone marrow, 10 to 19% blast in bone and blood marrow, 10 to 19% blast है, ठीक है, इसमें in blood and bone marrow. इधर के greater than 20% blast, ठीक है, greater than 20% blast. और chronic phase के मोस्ट कॉमन है लेस देन 10% blast.
Okay, less than 10% blast, less than 10% blast, 10. ठीक है, ट्रांसलोकेशन होगा BCRL इज 9:22, टी ट्रांसलोकेशन 9:22 BCR ABL, ठीक है। फिर देख थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, leukocytosis, splenomegaly। एक्स्ट्रामेडुलरी ब्लास्ट फॉर्मेशन, ठीक है। क्लस्टर ऑफ ब्लास्ट इन बोन मैरो बायोप्सी, अभी बोन मैरो बायोप्सी करे, बोन मैरो बायोप्सी करे तो मालूम पड़ा कितना, 2/3 माइलॉइड, माइलॉइड 1/3 लिम्फोइड। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है ही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो है ही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 2/3 माइलॉइड, 2/3 माइल, 1/3 लिम्फोइड, लिम्फोइड। एक्स्ट्रामेडुलरी ब्लास्ट फेडरेशन, एक्स्ट्रामेडुलरी ब्लास्ट फेडरेशन, सीरम LDH इंक्रीज हो गया, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, decrease score of neutrophilic alkaline phosphatase, decrease score of neutrophilic alkaline phosphatase। अदर फाइंडिंग्स या सीरम यूरिक एसिड और ये बाकी है। डिक्रीज स्कोर ऑफ नाप, न्यूट्रोफिलिक अल्कलाइन फॉस्फेटेस, न्यूट्रोफिलिक अल्कलाइन फॉस्फेटेस ये प्रेजेंट रहता है डाइज में, और ये न्यूक्लियोफिलिक अल्कलाइन फॉस्फेटेस जब अगर मतलब डिक्रीज हो गया, मतलब सेल मैच्योर, मतलब म्यूटेटेड हो गया। एनीमिया, हाइपरमेटाबॉलिज्म, वेट लॉस, स्प्लीनोमेगाली, ब्लीडिंग टेंडेंसी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है इसके लिए। ब्लड और बेसोफिलिया, ब्लड में बेसोफिल है, एक्सीलरेटेड फेज में, एक्सीलरेटेड फेज में बेसोफिल है, मतलब एसिड फॉस्फेटेस कम है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, प्रीडोमिनेंट सेल्स न्यूट्रोफिल्स एंड माइलोसाइट्स। अब इधर इसमें जो क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया है इसमें सिर्फ मतलब क्या, इसमें सारे माइलोब्लास्ट, मेटामाइलोब्लास्ट इसमें जा रहे थे, ठीक है। इसमें सिर्फ माइलोस
BCR भी है, इसके पास ABL भी है, ABL दो में BCR भी है, ABL भी है। ट्रांसलोकेशन हो गया है 9 से लेकर 22 पे, ठीक है, ट्रांसलोकेशन हो गया है। ABL BCR चिमेरिक फ्यूजन हो गया, ठीक है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पे, ठीक है। ट्रांसलोकेशन फ्यूजन में ABL हाइब्रिड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, काइनेस, क्या प्रोड्यूस करता है, पाइरूवेट काइनेस, टायरोसिन काइनेस प्रोड्यूस करता है। तो उसकी वजह से काइनेस है इरेगुलर, इसकी वजह से इरेगुलर ग्रोथ। Okay, got my point. So that is the thing you can see here. So that is the classification. Now सिर्फ इसमें लिम्फोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट जा सकता है, बाकी कोई नहीं जा सकता क्रॉनिक में, ठीक है। माइलोब्लास्ट बस, प्रीडोमिनेंस इन न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिलिया बढ़ गया है, ठीक है। बेसोफिल बढ़ गया, डिक्रीज लैब स्कोर है, ठीक है। प्लेटलेट काउंट भी कम है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, बोन मैरो से मार्क हाइपरसेल्युलरिटी, माइलोइड हाइपरप्लेशिया, ठीक है। माइलोइड हाइपरप्लेशिया 2/3 माइलोइड था ना, 1/3 ये था। बोन मैरो शो हाइपरप्लेशिया, माइलोइड हाइपरप्लेशिया, डिमिनिश एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। ऑफ मेगाकारियोसाइट आर ईदर इंक्रीज और नॉर्मल ऑफ मेगाकारियोसाइट, बेसोफिली इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, बैलेंस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो रहा है। T9 और 22 में शॉर्टन क्रोमोसोम नंबर 22 नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, भी एक प्रोटो ऑन्कोजीन, characterized by overproduction cell of myeloproliferative neoplasm of proliferating hematopoietic stem cells. Chronic myelogenous leukemia is one of the myeloproliferative neoplasm of hematopoietic stem cell characterized by overproduction of myeloid series, with the result splenomegaly leukocytosis, ठीक है। देखिए माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज है ओवर प्रोडक्शन ऑफ माइलॉइड सीरीज। इधर क्या है, इमेच्योर माइलोब्लास्ट सेल रिजल्टिंग इन अक्यूमुलेशन इन बोन मैरो, ठीक है। हेटेरोजेनस डिसऑर्डर ऑफ मैलिग्नेंट माइलॉइड सेल इनटू ब्लड एंड बोन मैरो, मैलिग्नेंट माइलॉइड सेल इनटू ब्लड एंड बोन मैरो, मैलिग्नेंट माइलॉइड सेल इन ब्लड। म्यूटेशन में आएंगे हेरिडिटी म्यूटेशन, केमिकल कार्सिनोजेसिस, लॉन्ग यूज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, टोबैको, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन, लिम्फेडेनोपैथी और स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। लीवर, बोन पेन एंड टेंडरनेस, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लास कॉज बोन इम्पेयरमेंट, न्यूट्रोपिनिया, DIC, म्यूटेशन हेरिडिटी होगा, केमिकल कार्सिनोम, टोबैको होगा, लॉन्ग टर्म होगा, एंटी कैंसर ड्रग, म्यूटेटेड टायरोसिन काइनेस होगा, म्यूटेटेड टायरोसिन काइनेस, म्यूटेटेड टायरोसिन काइनेस।
Etiopathogenesis क्या, tobacco smoking, chemical carcinogens, long-term use of anti-cancer virus, clinical fatigue, weakness, neutropenia, thrombocytopenia, bone tenderness, ठीक है. Clinical features, thrombocytopenia, fatigue, anemia, bone pain, tenderness, lymphadenopathy, etiology, heredity, radiation, chemical carcinogens, ठीक है, like chemical carcinogen mutation, which inhibit maturation of myeloid stem cell. ये पेरिफेरल ब्लड काउंट क्या है, टोटल मार्केट इंक्रीज हो गया है, HB डिक्रीज हो गया है. अभी WBC में तो HB गिरा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है, उसका हाई एंड न्यूक्लियोसाइट लार्जर देन लिम्फोसाइट है. माइलोब्लास्ट हैज और रोड्स और अज्यूरिक नीडल लाइक रॉड्स